हाय गाइस, मैं हूं विक्रम। और मैं आनंद। ये एक स्पेशल रिपोर्ट है जिसमें हम बताएंगे कि इस साल के टॉप इवेंट्स क्या हुए हैं और इनसे हमें क्या सीख लेनी चाहिए। ये सिर्फ हमारे व्यूज़ हैं। As this is our list of the biggest events of 2018. नंबर 10 पे लेट्स कवर कैम्ब्रिज एनालिटिका। कैम्ब्रिज एनालिटिका एक स्कैंडल था जिसमें एक पॉलिटिकल कंसल्टिंग फर्म ने 8.7 करोड़ लोगों का एफपी डेटा न केवल लीक करवाया पर उसे मैनिपुलेट करके यूएसए 2016 इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करा था। द स्कैंडल was more about Facebook and the way it handles their private data than about other firms scavenging it for ulterior motives. The expose showed how data mining by such firms is used to poison our beliefs, views, and then poison us. Moreover, it brought back the debate on privacy policies of firms like Facebook or even Google. So this was a major breach of trust, and I'm really sorry that this happened. We have a basic responsibility to protect people's data, and if we can't do that, then we don't deserve to have the opportunity to serve people. नंबर 9 पे है क्लाइमेट चेंज। आप जानते ही होंगे कि हर साल हमारा एनवायरनमेंट खराब होता जा रहा है और हम इसमें कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रहे। 2018 has been registered as the fourth warmest year and the emission of greenhouse gases are at an all-time high. Catastrophes चारों तरफ हमको देखने को मिल रही हैं और people सफ़र कर रहे हैं इनकी वजह से। This has begged us to ask the question, will we solve this crisis or will we perish? The answer is that we need to start, and we need to start now. There are two threats that dominate everything else: annihilation through nuclear war. The other wasn't recognized until really the 1970s, effect of human use of fossil fuels and other actions, including industrial meat production and others, is leading to a rapid increase in carbon dioxide in the environment, which is warming the environment at a rate not seen in the historical record. नंबर 8 पे है थाई केव रेस्क्यू। शायद इस साल की सबसे ड्रामेटिक स्टोरी थी जब 12 बच्चे अपने कोच के साथ एक ट्रिप पे गए थे बट वो फंस गए एक केव के अंदर। The world watched in awe and shock as various efforts were made to rescue them, and by each passing hour, it was filled with tension around the world. Eventually, they were freed and rescued. This story was the most inspiring event as it showed traits of human strength, determination, and endurance, but सबसे ज़्यादा important, the will to keep on trying in spite of obstacles. On Monday, July the 2nd, they found the boys perched on a rocky ledge and were met by an unforgettable chorus of little voices. How many of you? 13. Brilliant. What day is it, the boys ask? Monday. You have been here 10 days. 10 days. You are very strong. We are happy too. Thank you so much. Okay. So where you come from? England, UK. नंबर 7 पे है वुमेन स्पोर्ट्स इन इंडिया। वेल, इस साल इंडियन विमेन ने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स क्रिएट किए अपने लिए एंड दे हैव रीच्ड टू न्यू हाइट्स। बॉक्सिंग लेजेंड मैरी कॉम हैज़ वन द 6th वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड। देयर आर अदर फीमेल एथलीट्स, Dati Chand, Huma Das, that have come into picture. PV Sandhu has become the first Indian woman to win the prestigious BWF World Tour Finals tournament. All in all, it has been a great achievement for Indian women in sport. On number 6, we have the Football World Cup final match. अगर हम बात कर रहे हैं स्पोर्टिंग इवेंट्स की और इंस्पिरेशन की, तो फीफा वर्ल्ड कप फाइनल बहुत इंस्पिरेशन से भरा था। क्रोएशिया एक टीम जो आज तक के फाइनल में कभी नहीं पहुंची थी, वो फाइनल में पहुंच के 2 times चैम्पियन फ्रांस के साथ खेली थी। अनफॉर्चुनेटली Croatia couldn't overpower the French as the French became champions again.
नंबर 5 पे है फेक न्यूज़। वेल इस साल हमने देखा कि कैसे फेक न्यूज़ बढ़ती जा रही है, स्पेशली फ्रॉम अ सर्टेन प्रेसिडेंट. But this year we saw it in a much more deplorable state. When in July, a mob lynched 5 people because एक fake news फैल गया था महाराष्ट्र में regarding child abduction. Another young man was attacked by a mob based on another rumor spread on WhatsApp. This fake news has caused WhatsApp to react by limiting its forwards to only 5 people. But this also begs us to ask the question, was WhatsApp to blame for all this? Or was our society to blame for this? And the truth lies somewhere in between of these things. On number 4 we have the CBSE paper leak. इंडिया में काफ़ी टाइम से बहुत से पेपर लीक्स होते आ रहे हैं। बहुत से स्कैम्स हुए हैं, जैसे व्यापम स्कैम, एम्स का पेपर लीक हुआ था, एसएससी का भी हुआ था। बट दिस ईयर सीबीएसई लीक ऑफ 10th क्लास एग्जाम वाज अ रियल शॉकर। इसका परिणाम निकला कि सीबीएसई हैड टू टेक द पेपर अगेन, जिससे बहुत से स्टूडेंट्स को गुस्सा आया, फ्रस्ट्रेशन हुई, प्रोटेस्ट भी किया था उन्होंने। इट वॉज अ वेरी न्यू लॉ इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड टेस्टिंग इन इंडिया। नंबर 3 पे है जीन एडिटिंग। Well, every year science progresses further and further. But this year what caught us by eye is the CRISPR technology. CRISPR technology जीन एडिटिंग की टेक्नोलॉजी है जिससे कि काफ़ी सारी दिक्कतें इन जीन एडिटिंग सॉल्व हो चुकी हैं। न्यूज़ इसके बारे में नहीं है, न्यूज़ है कि जीन एडिटिंग ऑन ह्यूमन बेबीज करी जा रही है बाय चाइनीज साइंटिस्ट्स। दिस हैज कम टू अ शॉक टू द वर्ल्ड वेर इन वी आर प्लेइंग गॉड बाय सम स्टैंडर्ड और अनदर. This begs us to ask the question, what will happen in the future? Will we edit ourselves? Will we become something more than human? Number 2 पे है #MeToo movement. द हैशटैग मीटू मूवमेंट शुरुआत हुई थी हॉलीवुड में 2017 में, और इस मूवमेंट ने काफ़ी बड़े बड़े नामों को गिराया है। बट इस मूवमेंट का इंडिया में आना इस साल में हुआ, when the movement got started by तनुश्री दत्ता, जब उन्होंने नाना पाटेकर को अक्यूज़ किया ऑफ इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर ऑन मूवी सेट बैक इन 2008। उस एलिगेशन के बाद, उस एक्यूजेशन के बाद, इट हैज़ बिकम अ रैलिंग क्राई अगेंस्ट सेक्शुअल हरासमेंट, as multiple women have come out with their own Me Too stories against some very powerful men like MJ Akbar, who resigned, Alok Nath, Sajid Khan, Anu Malik and other powerful men. Me Too movement जो है एक प्लेटफॉर्म है to have important debate and discussions on the idea of consent, on the way we use our language, especially male, how we use our language, gender sensitization at the workplace, and more importantly, relations of power at the workplace. And number 1 पे है the section 377 judgment. इस साल हमारी जुडिशरी ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स क्रिएट किए हैं, जैसे द साबरमला टेम्पल जजमेंट, द आधार कार्ड रूलिंग, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट जजमेंट केम ऑफ द नावतेज जौहर केस, in which Supreme Court decriminalized homosexuality and declared 377 unconstitutional. The landmark judgment paved the way for a much more open and liberated society, wherein the marginalized section, the LGBT community, no longer is being throttled by the major community. The judgment is not merely about recognizing multiple ideas of love and legality, but also gives an opportunity to society to redeem itself and make up for past mistakes. It's time we accepted and recognized the various differences that makes India a very unique nation.